हेलो स्टूडेंट्स, हम फिशेज के स्पेशल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इन फिशेज। आज हम पढ़ते हैं पॉइजन ग्लैंड्स इन फिशेज। ये स्पेशल करेक्टर्स सभी जो पाए जाते हैं फिशेज में, वो उनको जो है अपने उस स्थान पर जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, शत्रुओं से बचने के लिए, खाने को ढूंढने के लिए, इन सब के लिए पाए जाते हैं। तो पॉइजन ग्लैंड जो है वो भी शत्रुओं से बचने के लिए पाई जाती हैं। इसमें जो है द ब्रांच डीलिंग विद द स्टडी ऑफ पॉइजन्स एंड वीनम ऑफ द फिशेज में बी टर्म्ड एज इक्थियोटॉक्सिनोलॉजी। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं इक्थियोटॉक्सिनोलॉजी। एट लीस्ट 1000 स्पीसीज ऑफ फिशेज आर दो टू बी venomous or poisonous by virtue of their toxicity alone they do not produce major ecological problem। तो 1000 से ज़्यादा स्पीशीज फिशेज हैं, उनमें ये पॉइजन ग्लैंड पाया जाता है। अब है डिफरेंस बिटवीन पॉइजन एंड वीनम फिशेज। तो फिंडले ई रसेल ने 1965 में बताया, इलेबोरेटली डिफाइंड दैट पॉइजनस एंड विनोमस फिशेज द टर्म्स पॉइजन फिशेज जनरली अप्लाइड टू दोज फिशेज हुज टिश्यू आइदर इन पार्ट और एंटायरली आर टॉक्सिक। उनके कोई भी पार्ट जो है वो या तो एंटायरली या आइदर इन जो है ये टॉक्सिक होते हैं। द टर्म विनोमस फिशेज ऑन द अदर हैंड्स इज यूजुअली limited to those fishes which are capable of producing a poison in highly developed secretory organs और groups of cells। इनमें जो है highly developed secretory organs और cells के ग्रुप पाए जाते हैं, and which can deliver this toxin during a biting of stinging act। जब ये काटते हैं या स्टिंग करते हैं तब ये जो है उस पॉइजन को छोड़ते हैं। इन रियलिटी ऑल venomous animals are poisonous but not all poisonous animals are venomous। Fishes in which a definite venom apparatus is present are sometimes called phanerotoxic, while the fishes whose body tissue are toxic are called cryptotoxic. Although the word venomous and poisonous are often used synonymously, most toxinologists now try to confine the use of the term venomous fishes to those having a gland or group of highly specialized secretory cells, a venom duct, and a structure for delivering the venom. Sting or spine in the fishes are generally denoted as venom apparatus, which transports the venom. Though in strict sense, venom apparatus comprises the gland plus duct plus sting or spine. Poisonous fishes, as distinguished from venomous fishes, lack such an apparatus. Poisoning by such fishes usually takes place through injection। अब है डिवीजन ऑफ पॉइजनस फिशेज। तो फिश पॉइजनिंग इज सिनोनिमस विद इक्थियोटॉक्सिज्म। हालस्टीड 1967 में हालस्टीड ने बताया हैज़ मेड 4 डिविजन्स ऑफ पॉइजनस फिशेज। उन्होंने पॉइजनस फिशेज को 4 भागों में बांटा। फर्स्ट इक्थियोसैक्रोटॉक्सिक फिशेज, सेकेंड इक्थियोटॉक्सिक फिशेज, थर्ड इक्थियोहीमोटॉक्सिक फिशेज, फोर्थ इक्थियोकाइनोटॉक्सिक फिशेज। फर्स्ट है इक्थियोसार्कोटॉक्सिक फिशेज, दोज फिशेज विच कंटेन ए टॉक्सिन विद इन देयर मस्कुलेचर विसरा और स्किन। या तो इनके स्किन में होता है या मस्कुलेचर विसरा में होता है। इनके एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोम्स, इलास्मोब्रेंस, काइमीरा, टेट्राडोन, स्कोम्ब्रोइड और जैम्पलेट। सेकेंड है इक्थियोटॉक्सिक फिशेज, दोज फिशेज विच प्रोड्यूस ए टॉक्सिन जनरली कन्फाइंड particularly to female gonads। In such fishes, there is a relation between gonadal activity and the production of toxin. Most members of this group are freshwater fish species. This division would include those fishes whose roe are poisonous. Third है ichthyohemotoxic fishes, those fishes which have a toxin in their blood. Some freshwater eels and several marine fishes make up this group. Fourth है ichthyocrinotoxic fishes, those fishes which have a toxin in their blood. Some freshwater eels and several marine fishes make up this group. Fourth है ichthyocrinotoxic fishes, those fishes which produce toxins by glandular secretion but lack a true venom apparatus. Example box fishes or trunk fishes and the lampreys. These may produce a toxic substance in their skin and subsequently release these toxins into their environment.
अब है केमिकल नेचर ऑफ फिश टॉक्सिन्स. Toxins of fishes are complex mixtures. Some are protein while other are peptides, amines, quaternary ammonium compounds, mucopolysaccharides, lipids and saponins. However, the structure of most of the marine poisonous is still unknown. Some of the marine venom contain enzymes, but these substances are not nearly as common as they are in the terrestrial animals venom. अब है zootoxicological properties of fish toxins. The zootoxicological properties of the fish toxins vary as do their chemical properties. Some fish venom provoke rather simple effects such as transient vasoconstriction or vasodilation, while other provoke more complex responses such as parasympathetic dysfunction or multiple concomitant changes in the blood vascular dynamics. Russell 1965 reported that the fish poison metabolites may bring bioactivation. All of the fish venom have at least one outstanding common biological property, that they produce immediate intense pain. This pain is usually for more severe than that experienced following the bite of a snake or a black widow spider. The toxins of ichthyosacrotoxic fishes differ remarkably from the toxins of the venomous fishes. There is no chemical or physiopharmacological relationship between the toxins of the venomous and poisonous fishes. There appears to be some relationship between certain of the toxins of the poisonous fishes, but this is not as clearly evident as the similarities in the venomous fishes. For example, Ciguetra toxin and Gymnothorax toxins appear to be the same, and also tetrodotoxin is the same poisonous as that found in the newt Pterica torosa. Important venomous fishes. Over 200 species of fishes are known to be venomous. Very common among them are stingrays, beavers, scorpion fishes, zebra fishes, stone fishes, stargazer fishes, catfishes, clarias, sharks, redfish, sturgeon fishes. ये सभी जो है पॉइजनस पाई जाती हैं. अब है occurrence of venomous fishes. Venomous fishes are most frequently found in the Pacific areas and the greater part that are inshore fishes. They are inshore fishes. Some are found in shallow waters, whereas some are found in deep waters. Most venomous fishes are non-migratory and slow swimming. They tend to live in a protected habitat in and around corals, rocks, or keep beds, or they spend much of their time buried in the sand. अब है वीनम. ये वीनम एप्रेटस का डायग्राम है, और जिनमें पाई जाती है वीनम कौन कौन सा पाया जाता है, ये हम फिशेज का नाम है. ये जो है डेसिएटिडी, ये जो है विपरेज और स्टिंगरेज, यूरोलोफिडी राउंड स्टिंगरेज, माइलोबैटिडी बैट और ईगल रेज, जिमुरिडी बटरफ्लाइज रेज, पोटामे ट्राइगोनिडी रिवर रेज, राइनोप्टेरिडी काउनोज रेज, मोबुलिडी डेविल रेज. ये सभी फिशेज जो हैं कॉमनली रेफर टू दी स्टिंग रेज. द स्टिंग इज कंपोज ऑफ एन इनर कोर ऑफ vasodentine and the outer layer of enamel. It is bilaterally serrated with the serrations directed cephalically. There may be one or several stings in adult Eurotopus halleri. The sting is about 4 cm in length, while in larger species it may reach 40 cm in length. The spine is encased in an integumentary sheath. The venom is contained for the most part in the epidermal tissue within and overlying the two ventrolateral grooves of the spine. The venom is contained for the most part in the epidermal tissue within and overlying the two ventrolateral grooves of the spine. The integumentary sheath is composed of an inner variable layer of loose areolar
connective tissue covered by an outer layer of epithelium. The inner dermal layer is rich in thin-walled blood vessels. Occasionally, it projects into the epidermis, forming delicate papillae which carry nutritive blood vessels. The epidermis is composed of a basal group of flattened, heavily pigmented cell. In places, these cells form a distinct pigmented layer. अब है chemistry of stingray venom. Odor ammonical, color light, nature slightly acidic, pH 6.7. Total protein 30%, total N2 3%, carbohydrate 3%. Mole weight of toxic 1 lakh protein, important enzyme serotonin, 5 nucleotide, phosphodiesterase but no protease or phospholipase present. There is special property. The activity of venom is lowest at pH 4.8 but is related between 5.2 and 8.6. Our toxicity of stingray. Stingray venom is known to exert a deleterious effect of mammalian cardiovascular system. Low concentration of the venom give rise to simple vasodilation or vasoconstriction. It is apparent that the venom affects the normal pacemaker. स्कॉर्पियन फिशेज, ये जो है कुछ स्कॉर्पियन फिशेज हैं जैसे फिन स्पाइंस, इंटेगमेंटी शीथ, वीनम ग्लैंड, और इनमें जो है ये जो है स्कॉर्पियाना और शोर, ये जो सिन करेजा ये जो है पाई जाती हैं. ये स्कॉर्पियन फिशेज हैं जिनमें कि ये वीनम एपरेटस पाए जाते हैं. अब है factors that make a fish poisonous. Numerous causes for being the fish poisonous may be summarized. First, feeding of toxic or non-toxic marine plants. In later case, it was observed that the metabolic process of fishes were able to alter certain plant components into toxicant. Second, feeding on toxic proteagen, particularly dinoflagellates. Third, feeding on shoreline terrestrial plants whose berries or leaves have been swept in the sea. 4. Pollution of the ocean by industrial poisonous. 5. The dumping of large quantities of metals, especially copper, into the ocean, such as occurred in the Pacific at the end of world. 6. Epidermis giving rise to toxic endogenous substances. Spawning activity. 8. Feeding on corals. 9. Feeding on jellyfishes. 10. Feeding on the toxic mollusks. 11. Feeding on zooanthellae in corals. 12. Feeding on other toxic fishes. 13. The dumping of radioactive materials into the ocean. 14. Climate change. 15. Leave the fish exposed to the moonlight. तो ये हैं पॉइजनस फिशेज जिनमें पॉइजन पाया जाता है और जिनके कारण ये जो है ये अपनी पॉइजन ग्लैंड के कारण शत्रुओं से अपनी रक्षा कर सकती हैं भोजन प्राप्त करने के लिए, और कई तरीके अपने जो है अपनाती हैं जिनसे ये स्पेशलाइज ऑर्गन्स होते हैं जो कि इनको एडेप्ट एनवायरनमेंट में रहने के लिए एडेप्ट करते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको जो है आप लिखिएगा और अगले वीडियो में हम अगला स्पेशलाइज ऑर्गन पढ़ेंगे. थैंक यू.